जस हिंदी के सारे व्यूअर्स को नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में आपकी होस्ट आश्मिता। सबसे पहले विशिंग एवरीवन अ प्लेजेंट मंडे इवनिंग, वेलकम टू द वीक। एक और काफ़ी हेडलाइन फिल्ड एंड एक्साइटिंग वीक बन रहा है, बट ऑफ कोर्स देयर आर सम थिंग्स जो कंसर्निंग भी हैं, जो न्यूज़ डेवलपिंग ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे आज रिलीज़ हुई हैं। जहाँ पे कोविड को लेके यूनाइटेड स्टेट्स की सिचुएशन को डिस्कस किया जाता है, वहाँ पे देयर आर फ्यू मेन थिंग्स जहाँ पे हमें पता है कि इस चीज़ का इम्पैक्ट नेगेटिव तरीके में होना ही होना है। प्लस इट इज़ एन इलेक्शन ईयर, सो वी अंडरस्टैंड दैट इवन दो ये एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है, दिस इज़ ऑल्सो ए वेरी politically charged environment. So इस situation में काफ़ी ऐसे responses देखने को मिल रहे हैं, not just from the government but from institutions जो on the surface ज़्यादा सेंस नहीं बनाते, खास करके अगर हम एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस में बात करें। वन ऑफ द बिगेस्ट एरियाज जहाँ पे ये चीज़ एविडेंट है, दैट इज़ द स्कूलिंग सिस्टम, खास करके जहाँ पे यहाँ की हायर इंस्टीट्यूशंस का ओवरलैप होता है इमिग्रेशन पॉलिसी के साथ, एंड the politics of all of that comes into play. So आज भी हम इसी चीज़ पे आपके साथ प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ गेस्ट भी ज्वाइन करेंगे हमें इस डिस्कशन पे एक एक्सपर्ट ओपिनियन देने के लिए, बट आई वांट टू टेल यू व्हाट आई एम एग्जैक्टली गेटिंग इनटू हियर। सो टुडे आइस, जो यहाँ की इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट एजेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स में, उन्होंने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की। एक प्रेस रिलीज आइस की तरफ से आज रिलीज़ हुआ that basically says जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं खास करके F1 वीज़ा पे, वो इस फॉल 2020 के सेमेस्टर में ऑनलाइन एजुकेशन के ज़रिए यहाँ पे अपने वीज़े पे नहीं आ पाएंगे। नाउ ऑफ कोर्स यू नो दैट इन द यूनाइटेड स्टेट्स अभी ये सारे ही सिटी स्टेट्स एंड हायर एजुकेशन, इवन यू नो स्टेट एंड पब्लिक स्कूल्स इस चीज़ का डिसीजन डिसाइड कर रहे हैं कि उन्होंने स्कूल्स को इन पर्सन खोलना है या नहीं। आर दे गोना जस्ट कीप स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेस जैसे इन्होंने एंड ऑफ spring and into the end of the school year किया अभी तक, or are they going to take the chance and open schools in person in the fall जब second wave हो सकती है, जब flu season भी काफ़ी तेज़ी से शुरू हो जाता है, and let the students back on campus. So all these schools are deciding that. ICE ने ये announce किया कि कोई भी यहाँ पे F1 पे आता है, then उनको कुछ exceptions लागू होंगी. For example, they cannot take a full semester course load of online classes. आपके साथ हम सारी details share करेंगे, but I just want to mention once again, this comes at an interesting time because सिर्फ अभी last year ही एक report release हुई थी regarding international students that said that the total number of international students in the United States is at an all-time high. This is the highest number of international students that the United States has ever had as of the 2018-2019 school year. The number there is about 1 million plus students that are here as international students, and this also comes at the same time when President Trump is tweeting that schools must open in the fall. So President Trump ये tweet कर रहे हैं कि schools को open करना होगा. It's not clear, आप tweet देख सकते हैं कि what he's referring to, if he means high schools, middle schools, colleges, universities, if he means in person, what exactly he's referring to. But after this tweet, Florida announces that they will also open all of their schools in the fall. In fact, उन्होंने एक executive order pass किया है saying that they will mandate that all the schools open in the fall. And it's funny that Florida says it. Chalo funny to nahi hai, but it's just an interesting point because if you look at the cases in Florida, coronavirus cases, they have some of the highest numbers in the country right now, with the exception of New York. I think Florida ka cases, they said, have jumped triple for the last 3 days. So आप देख सकते हैं कि एक तरफ public health crisis, एक तरफ politics and the policy of all of this, and बीच में फंसे हैं बेचारे international students that
not only make up a good chunk of the total student body here, but if you look at the slide that's on screen, you can see that according to the data from the U.S. Department of Commerce, international students contributed $44 billion to the U.S. economy in 2018. So ये कोई हम छोटी सी बात लेके नहीं यहाँ पे discussion कर रहे. I want to share with you the specifics of what the ICE press release has changed, and of course because ये एक legal matter है, especially जहाँ पे F1 visas and कितने सारे students यहाँ पे उस visa status पे आते हैं, OPTs लेके काम करते हैं, उनको ये चीज़ कैसे affect करेगी. We'll discuss all of that after the break with our guest. आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें. मिलते हैं ब्रेक के बाद. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक. इन बात हो रही है कि जो आइस यूएस की इमिग्रेशन कस्टम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की जो आज ही अनाउंस हुई नई चेंजेस F1 वीज़ाज़ को लेके कैसे स्टूडेंट्स को इम्पैक्ट करेंगे. जैसे हमने आपको बताया, दिस इज़ अ वेरी पॉलिटिकली चार्ज सिचुएशन. ऑफ कोर्स एक तरफ पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, एक तरफ 2020 का फेडरल इलेक्शन, बीच में फंसे हुए इमिग्रेशन पॉलिसी एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो अब इस समस्या में है कि फॉल में अगर उनका स्कूल, उनका चोजन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑनलाइन क्लासेस ऑफर कर रहा है एंड उनको अपने F1 वीज़ा को लेजिटिमेट रखने के लिए इन पर्सन क्लासेस अब लेनी पड़ेंगी. व्हाट विल दे डू? सो टू डिस्कस सम ऑफ द फाइन प्रिंट details of this new announcement by ICE, we have joining us, of course, our returning panelist, immigration lawyer and expert in all these matters, Ms. Akanksha Kalra, joining us from Philadelphia. Ms. Kalra, welcome to the show. Namaste. Ms. Kalra, I think we're having some technical difficulties. We're just going to test that connection and get you back. But in the meantime, I want to let everyone know a little bit of the specifics of this policy. So there's three main points. जो ICE, जो United States की Immigration and Customs Enforcement Agency है, उन्होंने आज ही एक press release में announce किया basically three main things. F1, M1 वीज़ा के स्टूडेंट्स इस फॉल में जो स्कूल्स को अटेंड कर रहे हैं, जहाँ पे उनका जो आप कह लो कोर्स लोड होगा, उनका कोर्स लोड अगर पूरा ऑनलाइन क्लासेस से भरा हुआ है, they will not be eligible to stay in the United States under the F1 visa status. Once again, non-immigrant F1 students जो schools को अटेंड कर रहे हैं, जहाँ पे स्कूल ने इन पर्सन क्लासेस रखी हैं एंड वो उस इन पर्सन क्लासेस में नहीं जा रहे for whatever reason, they will also not be qualified or be allowed to remain in the United States under the F1 visa status. And lastly, F1 students who are attending schools that have a hybrid model, that is उनकी कुछ classes online होंगी, कुछ in person होंगी, they will be allowed only to take one class online. So अगर आप देखिए आपका एक semester में course load at least 3 या 4 classes का होता है, उनमें से आप सिर्फ एक class online ले पाएंगे. Otherwise, once again, you will not be able to stay in the country legally as part of the F1 visa as part of this new announcement. So let's see if we have Ms. Kalra back online with us. Ms. Kalra, good to have you on the program. Namaste. Namaste, Ashmita. I apologize for the technical issue. I'm not sure what happened, but I heard some part of your introduction. जी मिस कालरा, मुझे लगता है जब भी हम आपको प्रोग्राम पे लेके आते हैं बहुत ही भारी बरसात होती है. लास्ट टाइम भी कुछ ऐसा ही हुआ था and we lost you because of the thunderstorms. So hopefully you know the program goes well today, but no worries. Ms. Kalra, basically I was just walking the viewers through the three main points of this ICE announcement that was just announced today. So I guess my first question for you is, you know, this is another seemingly politically charged move by this administration to curtail or to, we can say, play to the base as opposed to enact some policy. I mean, there's so many different factors when it comes to schools, especially colleges, opening in person in the fall. I think Harvard just announced today that they will have
students on campus, but will be completely online. So let's use the Harvard example for the sake of this conversation. Harvard में कोई भी अपने F1 student के international students अगर आज की डेट में fall semester के लिए enrolled हैं, and their classes are now entirely online, according to this new announcement, what happens to them? So I haven't really read as to what Harvard has announced, but let's talk about the announcement that was made by the DHS, the Department of Homeland Security, today. So Department of Homeland Security agency है जिसके अंडर 3 immigration agencies आती हैं. एक is USCIS, US Citizenship and Immigration Services. दूसरी है ICE, Immigration and Customs Enforcement, और तीसरी है CBP, Customs and Border Protection. जो आज की अनाउंसमेंट हुई है वो आइस ने रिलीज करी है और उन्होंने ये कहा है कि जो एग्जेम्पशंस मार्च 2020 में F1 और M1 स्टूडेंट्स के लिए दी गई थी उन which were temporary, उन एग्जेम्पशंस को फॉल 2020 के लिए मॉडिफाई किया जा रहा है. So what that means is in March 2020 इमिग्रेशन ने DHS ने उनको अलाउ कर दिया था उन स्टूडेंट्स को जिनकी क्लासेस अब्रप्टली ऑनलाइन मूव कर गई थी कि उनका स्टेटस रादर अफेक्ट नहीं होगा. उनके लिए एक एग्जेम्पशन कर दी गई थी कि उन्हें ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं वो. बट यू हैव टू कीप इन माइंड अंडर द F1 regulations, under the immigration regulations, it is one of the requirements of the F1 status that you have to physically attend your classes. You can only take one course, 3 credit hours or something, which online if you are an F1 international student. So वो जो existing law है उसमें उन्होंने exemption करी थी मार्च में ड्यू टू COVID-19. जो आज की अनाउंसमेंट है उन्होंने ये कहा है कि हम फेडरल रजिस्टर में जो 60 डेज के लिए उनको नया रूल पब्लिश करना पड़ता है, हम वो exemptions को मॉडिफाई कर रहे हैं फॉर द अपकमिंग फॉल सेमेस्टर. So उन्होंने एग्जिस्टिंग लॉ चेंज नहीं किया है. एग्जिस्टिंग लॉ तो यही कहता है कि F1 स्टूडेंट्स को physically classes attend करनी पड़ती हैं. They have to. They cannot do it online. Some online courses are allowed for M1, not for F1. So that's what they are doing. So they're really not trying to change the policy here. What they are saying is we are going to modify exemptions. Now, having said that, is it political? This is election year. We keep talking about that. Everything is political. But the fact is, जो international students हैं, जैसे आपने पहले आप बता रहे थे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इंडिया और चाइना से आते हैं और भी बहुत सारे कंट्री से आते हैं. मुझे 21 साल हो गए इमिग्रेशन करते हुए. इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर अ लार्ज पार्ट ऑफ माय क्लाइंटेल बिकॉज वो बाद में अपनी डिग्रीज करके बहुत सारे एम्प्लॉयर्स उनको H1Bs पे हायर करते हैं. व्हाट आई हैव सीन इन द लास्ट 2 decades, more than 2 decades, इज पहले ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते थे मास्टर्स प्रोग्राम है, हायर स्टडीज, मास्टर्स, PhDs और वो सब करने के लिए. लेटली इन द लास्ट 10 years और सो उससे यंगर स्टूडेंट्स आने लगे हैं अब. बहुत सारे, आई एम श्योर आपके व्यूअर्स भी जानते होंगे, इंडिया से स्टूडेंट्स अब अंडरग्रेड करने के लिए आते हैं. सो वो 17-18 साल की उम्र में यहाँ आ जाते हैं, पहले अंडरग्रेड करते हैं, फिर अपना मास्टर्स करते हैं, फिर वो बाद में जैसे आप बोल रहे थे OPT लेके employers के लिए, US employers के लिए काम करते हैं, and then they finally get them, if they can, to work for them on an H1B. So those students do contribute billions of dollars to the US economy. The universities, private universities here, for-profit universities here, or even not-for-profit universities, they make a lot of money on these international students. So to use your example, Harvard, I am sure after this announcement, their international students' offices are going to be thinking as to how are they going to handle this. Because yes, it will impact their incoming class in the fall of 2020 if those students are not allowed to
either get their visa or take their classes online. Absolutely. So yes, it will impact them. And you know, it's just there's such an overlap with so many different fields here, right? If we look at international students from a revenue standpoint, and once again, जैसे आपने कहा, schools all over the country will be struggling in the coming months, maybe years, with dropping enrollment with the way that things are looking right now. I'm sure they already are. And even if enrollment and people are coming back to campus, surely वो उस तरह से पैसा नहीं खर्चेंगे because they're not able to gather in places like the public dining hall or attend the football games or do all these other things that are a source of revenue for the school. And at a time like that, to say that it, once again, going after international students, financially doesn't seem like the best idea because international students pay some of the highest tuitions. They aren't, you know, able to take advantage of federal grants or loans or student aid. They don't apply for in-state tuition discounts. They're actually paying a premium price for everything, right? And to say कि उनको बिल्कुल अब ये policy, like you said, the extension or the revision of the exemption, it seems like a pretty straightforward way to say that you're not welcome here, and it's a shame because their money could really be used by these institutions at this time. So, Akanksha ji, there's one a specific quote that I want to get your comment on. So, ICE recommended in this press release that students whose schools are online only should, I quote, transfer to a school with in-person instruction to remain in lawful status. So what kind of a situation, once again, does this put students in when we're talking about, you know, अगर कोई international student एक program या एक school में इतने लंबे process के बाद admit हुआ है, and then the school, for safety, legitimate safety reasons, much like Harvard, or we recently covered the big announcement by Cal State school system, which is the largest in the country, when they say we're online only, वो बेचारा, I hate to say बेचारा, but that poor international student, वो किस position में अब रह गए हैं? Yeah, it's going to be a बेचारा सही वर्ड है, मतलब बिकॉज वो बेचारे कहाँ जाएंगे, बच्चे ही तो हैं बेचारे. इवन जब इन मार्च व्हेन दिस हैपेंड, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डॉर्म्स इमीडिएटली ओवरनाइट वेकेट करने को बोला गया. वो बेचारे कहाँ जाएंगे? दे डोंट हैव, not a lot of them have families here. Some of them had to scramble and then rush back to their home countries. And I actually have relatives, you know, who's my niece, she had to leave because same thing, their classes moved online. They don't have a place to stay, or in fact they wanted to get back to where they had to go back where their parents are, because then they can continue to take classes online from there. But the question now remains, the students who are already here in the US and have been allowed to take classes to finish their spring semester or the summer semester, अब फॉल में वो एग्जाम्पशन जो उनको मिल गई थी ऑनलाइन क्लासेस की, दैट्स गोना गो अवे. सो जो एग्जैक्ट यहाँ से साइट कर रहे हो इस अनाउंसमेंट से, उसमें जो उसका इंटरप्रिटेशन यही है कि अगर आप इस स्कूल किसी ऐसे स्कूल में एनरोल्ड हो जहाँ आपके पास सिवाय ऑनलाइन क्लासेस के कोई और ऑप्शन नहीं है, देन यू नीड टू ट्रांसफर टू अ डिफरेंट स्कूल. व्हाट दैट मीन्स इज, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए एक SEVP करके प्रोग्राम होता है, स्टूडेंट्स एंड एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम, SEVP उसको बोलते हैं. और हर स्कूल का जो इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस होता है, दे हैव टू बी सर्टिफाइड बाय SEVP. और कई बार, I mean, this is unusual what is happening due to COVID-19, but even otherwise, normal course of things, sometimes international students transfer to different schools. So they are allowed to transfer from one school to another for different reasons. This announcement is telling them that if you are now enrolled in a school जहाँ आपके वो online classes ही हैं आपके पास option, then आप अपना status affect होने से पहले किसी और स्कूल में ट्रांसफर कर सकते हो जहां आपको शायद इन पर्सन क्लासेस का ऑप्शन मिले या हाइब्रिड ऑप्शन मिले, which is the third thing that they have talked about in this announcement. That's what it means. So yes, it leaves them in a mad scramble to try and get their, you know, things in order. These are for people who are either already here or are planning to come here in the fall. So yes, it's going to be confusing both for the students and for the schools also. I'm schools sure. And universities and as well. Another aspect of all of this is so many international students, खास करके हम इंडिया की बात करें,
use these agencies that facilitate the whole process, and the students themselves, unfortunately, sometimes have no idea about the ground reality with the schools and the admissions process and the international offices. So this is definitely, aapne kaha hai, it's about to be a very confusing time, but we're going to have you stick around. I have some more questions for you about what happens if they don't. And that's very important for us to discuss. What happens to these students if they don't transfer out of a school that is online only? Ms. Kalra, आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहे. Callers, viewers, stay tuned. Conversation ऐसे ही जारी रहेगी break के बाद. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक. एंड बात हो रही कि कैसे एक नई अनाउंसमेंट फ्रॉम आइस, इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट एजेंसी, अब ये डिक्लेयर कर रही है कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स में F1 वीज़ा पे स्टूडेंट्स ऑनलाइन ओनली क्लासेस लेते हैं, उनका वो वीज़ा वैलिड नहीं रहेगा. एंड हमारे साथ लीगल पर्सपेक्टिव पे अपना एक्सपर्ट ओपिनियन शेयर करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं मिस आकांक्षा कालरा एस्क्वायर, अटॉर्नी एट लॉ फॉर decades. Akanksha ji, welcome back to the program. Aap hame, from like a legal perspective, you're telling us that what this policy change actually is, the exemptions. And खास करके आपने SEVP की बात की, the Student and Exchange Visitor Program. That is essentially governing this rule change. Ms. Kalra, I would love to once again, let's throw up the three main points of what this new announcement has declared today from ICE. Akanksha ji, I'm going to read you another quote from this press release that's kind of, raises a big question for all the F1 students that are in this country currently, जैसे हम break से पहले बात कर रहे थे. Students who remain in the U.S. while taking only online courses may face immigration consequences, quote, including the initiation of removal proceedings. This is a quote from the ICE press release. What does that mean? Okay. So what that means is, जो उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं, उन्होंने कहा है या अगर आप ऐसे किसी स्कूल में हो, यूनिवर्सिटी में हो या कॉलेज में हो जहाँ सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस हैं, then you have the option of transferring to a school which offers in-person classes या hybrid model. जो आप पहले हार्वर्ड का एग्जांपल दे रहे थे, आई थिंक दे विल हैव टू स्विच टू समथिंग लाइक अ हाइब्रिड मॉडल. और उस एग्जाम्पशन में उन्होंने कहा है कि हम अलाउ कर देंगे आपको, अंडर द करंट रेगुलेशंस आप सिर्फ एक कोर्स कर सकते हो ऑनलाइन. Under the hybrid model, maybe they will allow more than one course online. Okay. They haven't said how many. They haven't said maximum how many. At least in the announcement today, they haven't specified that. So maybe schools will have to move for international students to some kind of a hybrid model. Now, coming back to your question of what does it mean for that you will be placed in removal proceedings, what ICE is saying, and the reason ICE, which is the enforcement wing of Department of Homeland Security, the reason this announcement has come from ICE is because ICE is the agency that administers the SEVP, the Student Exchange Visitor Program, is administered by ICE. नहीं तो हम usually ICE का जिक्र immigration enforcement, raids के, taking people into detention centers, usually हम ICE का उस reference में नाम सुनते हैं, but ICE also administers the SEVP, the program. Okay, so what that means, this announcement means about placing them in removal proceedings is when a person is in the United States in any kind of non-immigrant status, any kind of, for example, F1 पे है, or this announcement, by the way, is applicable both to F1 and M1. M1 students भी आते हैं, international students जो vocational courses के लिए आते हैं, F1 academic courses के लिए आते हैं. जो अगर आपका status किसी वजह से आप out of status हो गए, OOS बोलते हैं उसे, out of status, अगर आप out of status हो जाते हो तो आपको कुछ मोहलत, कुछ time मिलता है during which you can apply for a reinstatement of your status. Okay. अगर आपका status reinstate नहीं होता तो आप इस country में then unlawfully रह रहे हो. उस सिचुएशन में आपका जो SEVP प्रोग्राम में जो आपके हर स्टूडेंट को एक CVIS नंबर मिलता है, SEVIS नंबर, स्टूडेंट
एंड एक्सचेंज विजिटर इंफॉर्मेशन सिस्टम। वो जो सीविस रिकॉर्ड होता है वो 3 एजेंसीज के पास होता है। एक होता है आपकी स्कूल यूनिवर्सिटी जहां आप एनरोल्ड हो, वो इंटरनेशनल स्टूडेंट प्रोग्राम आपका सीविस रिकॉर्ड्स अपडेट करते हैं। दूसरा होता है वो इमिग्रेशन के पास, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी। और तीसरा वो सीविस इंफॉर्मेशन होती है डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, which oversees all of the US embassies and consulates worldwide. So जब आपका एक स्टूडेंट का स्टेटस खत्म हो गया या आउट ऑफ स्टेटस चले गए वो, अगर उन्होंने if they are not in compliance with the F1 regulations, then उनका जो इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस है वो ऐसी उनका सीविस रिकॉर्ड अपडेट करेगा कि इस स्टूडेंट ने या क्लासेस लेनी छोड़ दी हैं या जो भी है उसका, तो वो जो सीविस अपडेट होगा वो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के पास आ जाएगा, राइट? सो देन ICE कैन देन पुट दैट स्टूडेंट इन रिमूवल प्रोसीडिंग्स। रिमूवल का मतलब होता है डिपोर्टेशन प्रोसीडिंग्स। उस अगर आप रिमूवल प्रोसीडिंग्स में प्लेस कर दिए जाते हो, फिर आपको एक नोटिस टू अपीयर मिलेगा जिसके ऊपर लिखा होगा कि किस डेट और किस जगह पे आपको एक इमिग्रेशन कोर्ट में अपीयर होना पड़ेगा in front of an immigration judge. And ICE will say, the government will say, you are now out of status in the United States, therefore you should be placed in deportation proceedings. Or aap as a student, as a non-immigrant, as a foreign national, will be allowed to say why you should not be removed, why you should not be deported. So what this announcement is saying is, अगर वो ऑप्शन नहीं लेते किसी और स्कूल में ट्रांसफर करने का, देन आपके पास 2 और ऑप्शंस हैं। या तो आप हाइब्रिड मॉडल पे चले जाओ या आप छोड़ दो, यू गो बैक टू योर होम कंट्री, यू कैन कंटिन्यू। दे आर नॉट सेइंग कि आप अपनी क्लासेस लेनी बंद कर दो। वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने ऑनलाइन कोर्सेज ही सिर्फ लेने हैं तो आप यूएस में नहीं रह सकते, फिजिकली यहाँ नहीं रह सकते। अगर आप फिजिकली यहाँ से चले जाते हो, अपने कंट्री वापस चले जाते हो, आप वहां से ऑनलाइन कोर्सेज लेते रहो। आप एग्जाम्पल लो, जो स्टूडेंट्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नहीं हैं, जो यूएस स्टूडेंट्स हैं, माई ओन डॉटर जस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज, मार्च ऑनवर्ड्स उनकी भी क्लासेस सारी ऑनलाइन हैं। So they can take them whether she's here in Philadelphia or back at school where she goes to school, right? So, but she can still finish. She still finished her courses. She still graduated. So this announcement, as applicable to the international students, is saying that if you cannot switch to a school, or if your school is not offering in-person classes, either switch to one that does or does the hybrid, or you have the option of going back to your home country on your own volition and continue your education there online. But if you continue to remain in the US and you are now in violation of your status, then we will place you in removal proceedings. That's basically, in removal proceedings in short, matlab, now you are placed in deportation proceedings and you have to go to the immigration court in front of an immigration judge. That's what it means. Ms. Kalra, of course I'm asking you this because this is, literally what you do day in and day out. अगर किसी का immigration process चल रहा है, like for example someone who is here on an F1 visa who is looking to get an OPT and then जैसे आप पहले भी कह रहे थे, get sponsored by a company here, get an H1B, on that record, if there is this black stamp of removal proceedings, चाहे वो कोर्ट में जाके उसको अपील करके रिवर्स भी करा लें, showing evidence of the times, that mark is always on their record. Is that something जो बाद में उनको hurt कर सकता है as they move through the legal immigration process in this country? Well, you always have to disclose it. There is a question that will always ask in any kind of immigration application and petition. They will ask you, have you previously, are you currently in or previously been placed in removal proceedings? It's a yes or no question. So you have to answer it truthfully. So yes, God forbid, if a student in F1 status for whatever reason is placed in removal proceedings, will they have to disclose that on any, and if they come out of those removal proceedings, they're fine, their status is reinstated, या उनकी removal proceedings में से वो बाहर आ जाते हैं, उनको ये record हमेशा अपना disclose करना पड़ेगा. Yes, the answer is yes. Now, depending upon the facts of that particular case, how it will impact their future immigration status or ability to, or rather not ability, eligibility to get any kind of immigration status in the future would depend on what the situation or the facts of that particular case were. But yes, they have to disclose it. So once again, I guess for F1 students or M1 students, non-immigrant visa holders who are here on a student visa,
ये काफ़ी this is a pretty big announcement to come overnight, especially जब, you know, like we shared with our viewers at the beginning of the show, एक तरफ President Trump की tweet है, schools must open now, right? As if the tweet itself will make it safe for schools to open. And on the other hand, you have these big institutions saying, we're going the online only model, like a Harvard, like a Cal State school system. Do you see any challenges to this announcement from you know, various organizations that work to protect these kind of rights for immigrants? एक चीज तो अमेरिका में पक्की है, कोई भी किसी को भी sue कर सकता है. So do I see anybody challenging it? Yes, but the question is, will it be successful? I mean, like I said, the regulations clearly say कि जो F1 model है, उस under the F1 visa, the statutory, I mean, you have to take in-person classes. Yeah. You're only allowed to take one online course, and they are saying we will, under the hybrid model, allow, if the school chooses to do that, we will allow more than one. So think about this, you know, play it out. They are, the ones who are doing this are not really in violation of the law. What they're saying is we allowed these exemptions in March, but we will not allow them in the fall, is what they're saying. So it's like the change that they made in March for the spring and summer semester was a change to the existing regulations. What they're saying is, so we are modifying them, but what they're modifying, or what they're saying we will modify it to, is not palatable, not you know, given the current situation worldwide. Exactly. Think about this for a second. जो ये students यहाँ पे हैं, already हैं, and they are in their, like I said, a lot of them come as undergrads, right? They are in their teens, early 20s, whatever, or maybe mid 20s, and then they have parents back in, let's talk about India, because of course your viewers are mostly from India. They're going to be waking up to this news, right? This was announced later this, sometime mid-afternoon, late afternoon. So a lot of them are going to be waking up to the news, or to their children who are here or planning to come here, panicking over this. So it's going to be, and you know what, it's going to be confusing for. It's I mean, the confusion it's going to create, वो तो चलो एक बात है ही है, but ultimately, you know, this really the dilemma that this is putting in front of, जैसे आपने कहा, these young you know, members of our community, or late teens, early 20s, एक नई country में अपनी वो life बनाने की कोशिश कर रहे हैं the right way, with hard work, and now they have a choice between you know, find a school that may be for non-public health reasons be opening up to in-person classes, or, you know, stop your process, go back home. So that is quite a dilemma for international students. Ms. Gala, unfortunately, we don't have that much more time. जाते जाते आप कुछ advice, कुछ next steps हमारे viewers को बता सकते हैं that may be affected by this new policy? Right now, I think we all will be looking for and waiting for more information. Let's see when this rule is published. Usually 60-day period के लिए publish होता है Federal Register में. I honestly don't know what to tell these international students, but I think it'll be more a wait and watch to see what their international students offices are going to be advising them to do. I routinely tell F1 students who call about F1 related issues, and I always tell them, your international students officer, your DSO, your designated student official advisor, जो भी आप बोलो, उसके साथ in contact रहिए. वो आपको, as this unfolds, as more information becomes available, because schools are going to try and accommodate their international students. They're not going to want to lose them. Of course. The universities, they want their incoming class. They don't want to lose that revenue, right? So their international students' offices will be the best place to get the information. Best source for them to get the information. You know, that's a very interesting point you've made. इस situation में अगर किसी international student को pick करना हो कि मैं online classes India में बैठ के लूँ, or let me just skip a year,
especially when you're still paying top dollar, like Harvard, for example, will be charging full tuition for the fall, even though it's all online. So that's definitely a big revenue question for these institutions, especially at a time like this. Ms. Akanksha Kalra, thank you so much for joining us again and sharing your legal expertise with us. ज़रूर आप फिर आके हमें इस situation के बारे में updates दीजिएगा when you hear more or when we find out more. But for now, stay safe, and we hope the weather improves where you are. Take care. Likewise, thank you for having me, Ashmita. Of course. You Good take care. night. Bye-bye. Good night. बाकी दर्शकों मैं once again in summary यही बताना चाहती हूँ कि आज ICE जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की इमिग्रेशन कस्टम्स इन्फोर्समेंट एजेंसी है, उनकी तरफ से एक नई अनाउंसमेंट कि जो F1 M1 नॉन इमिग्रेंट स्टूडेंट वीज़ाज़ हैं उनको जो एक्सेप्शंस या एग्जेम्पशंस आप कह सकते हैं दी गई थी मार्च अप्रैल में कि आप अपने क्लासेस ऑनलाइन कर सकते हैं, उन एग्जेम्पशंस को फॉल 2020 सेमेस्टर के लिए हटा दिया गया है. सो सिंपली पुट व्हाट दैट मीन्स इज़ अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स में करंटली या आने वाले हैं F1 M1 वीज़ाज़ के अंडर, बी वेरी केयरफुल व्हाट काइंड ऑफ क्लासेस योर स्कूल इज़ ऑफरिंग. आपका स्कूल सिर्फ आपको ऑनलाइन क्लासेस ऑफर कर रहा है, यू मे बी आउट ऑफ स्टेटस. बट मोर डिटेल्स एंड इस चीज़ के बारे में जैसे ये स्टोरी डेवलप होती है जानकारी आपके साथ शेयर करते रहेंगे. एनी क्वेश्चंस कमेंट्स फॉर अस अबाउट दिस टॉपिक या कोई भी और टॉपिक जो आप चाहते हैं कि हम डिस्कस करें, आप ज़रूर हमें लिख सकते हैं info@justbroadcasting.com, ashmita@justbroadcasting.com. Have a good rest of your evening. Namaskar.